और मैं बहुत लकी थी कि मुझे किसी ने ये सिखा दिया कि लहजा नरम और बात सख्त। Assalamu alaikum. It's Annie Arslan. I am heading Central HR at Artistic Millionaire. Alongside, I am founder of Mind Healing. So, how can organization accelerate actions? इसमें I have to add 3 pointers. Number 1, first of all, intention does matter. So every organization जिसको accelerate करना है actions को, they have to have the intent of doing it. Number 2, once you have the framework, the other thing is how you are taking it into an implemented strategy and into actions actually. Number 3, continual improvement. Every time you do a step, the next time you have to have some learning outcomes. और इसमें कोई शाइनेस नहीं है कि हर इंसान अपने हर प्रोसेस से हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकता है, सेम एज विद द ऑर्गेनाइजेशन विद इदारा. सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट हर्डल फॉर वुमेन स्पेशली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़? इसमें हर लेवल की वुमेन के लिए अलग अलग तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं. सो अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूँ तो दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड वेयर दे डू वांट टू वर्क बट एट द सेम टाइम दे आर शाय एंड एट द सेम टाइम दे आर फीलिंग स्केयर्ड ऑफ टेकिंग द रिस्क, क्योंकि वो अपने घर की ब्रेड अर्नर्स हैं. तो कोई एक छोटी सी गलती उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है. हेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू हैव अ रोल इन इट. Equality, I think now world has reached to the space where we do need the more than equality, we should talk about equity. So equality though is something which we can never reach, because genders, I mean, men and women have different needs and different problems. They can only be addressed in a different manner. So equity is something which we believe in and which we promote within the organization when we talk about D&I. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी, व्हाट डज इट मीन्स इनटू एक्शन. सो हम क्योंकि एक्सेलरेट एक्शंस की बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट हाउ मच यू आर फैसिलिटेटिंग दैम इन देयर ट्रांसपोर्ट, how much you are facilitating them in taking their care of their kids. So if I talk about my own journey, I would not say कि बहुत ही fancy road था. Definitely it wasn't ever. It is not even by that day, because for a woman being seen in especially in the textile industry, which is absolutely crowded by men. So in that kind of industry, having a leading position is even more challenging, because it's at times men versus women fight as well. But nevertheless, I trust on one thing from day one. Number one lesson. So I always try to be on point with the facts and figures that always help me taking the table on my side. Feedbacks are like gifts. You can take them, you can throw them, you can give it as is to someone else. But do not take it personal, because by the end of the day, you are making a choice to make your life better and make people's life better who belong to you. रोड इजी कभी भी नहीं होगा. कितना मुश्किल है और कब तक चलना है, ये फैसला हमारा अपना होगा. सो दैट इज़ ऑल आई हैव टू ऐड इन इट.